पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैं पहले सादर प्रणाम से प्रोफेसर राणा पीवी सिंह सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा सर। अपना कहिए, माइक अनम्यूट कर दें, उनकी आवाज आनी चाहिए। राणा साहब माइक, उनके स्लाइड तो आ रहे हैं जी। आप ही स्टार्ट कीजिए सर, मैं तो नाम बोल के बस आप। ठीक बात है। प्रोफेसर राणा सर, कैन यू हियर मी? उनकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। प्रोफेसर राणा सर अपने को अनम्यूट करें। क्या हुआ, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। बिना बनारसी दाव के नहीं चलता है। हाँ, तो क्या है ना कि माँ भगवती का जो है वो चर्चा कर रहे हैं सब पीठ की आप, तो भगवती का पहले आराधना होना चाहिए मन में। हाँ, तो वादे करते ही रहते हैं लगातार। हाँ। अब ये पूरे भारतीय महाद्वीप में हमारे जो, आप तो बताएंगे ही कैसे सब पीठ है, 51 पीठ जैसे हम लोग जान रहे हैं, पाकिस्तान से लेके और अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है, ये सब आप बताएंगे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अष्टमी कहते हैं, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी भगवती के लिए डिवोटेड दिन पर, इतने ऑस्पिशियस दिन पर आज आप अपनी बातों को भगवती के संदर्भ में आप कहने जा रहे हैं, उनके पीठ के बारे में कहने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं हो, तो ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर भगवती के प्रति आराधना का भाव नहीं है। सभी लोग एक भगवती की आराधना में डूबे रहते हैं, और उसको आप जब आज याद दिलाएंगे, और लगातार याद दिलाने की जरूरत है। जो आपने कहा भारत शब्द का प्रयोग किया है, तो भारत के शक्तिपीठ या देवी पीठ, तो उससे एक बड़ी ही, जिसे विस्मृति कहते हैं, वो विस्मृति है पूरे देश में। विस्मृत भी है और स्मृति भी है। तो आपके इस व्याख्यान से स्मृति आएगी। पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इतिहास विभाग और हेरिटेज मैनेजमेंट के तत्वावधान में हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी आज हम लोगों के बीच में बोलेंगे, जिनका बायोग्राफी और जिनके बायोडाटा पढ़ने पर कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। तो वो सब लोग देख लेंगे, नेट पर इनका नाम लिखिए और सब इनकी किताबें और सब पता लग जाएगा आपको क्या है। ये एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक, जिसे कहा जाए शैक्षणिक एम्बेसडर, एकेडमिक एम्बेसडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे करके हम इनको देखते हैं। और काशी को और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को और जो कल्चरल जियोग्राफी को आपने रिप्रेजेंट किया, तो बहुत समय न हम ले करके ये कहना चाहेंगे कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी एक सम्मेलन में व्यस्त है। आज एक और सम्मेलन हो रहा है, उसमें ICHR के कुछ सेक्रेटरी वगैरह आए हुए हैं, तो बीच में वो भी ज्वाइन करेंगे। तो बहुत समय न बर्बाद करते हुए मैं प्रोफेसर राणा पीवी सिंह सर का बहुत स्वागत कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि भारत के जो शक्तिपीठ है या देवी पीठ है, उनके बारे में आप अपने विचार रखें। और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत जी। ये पूरा स्क्रीन क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ। अच्छा, ये फुल स्क्रीन कर दूं। अब ये पूरा दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, पहले से बढ़ गया है। अच्छा, तो हमारी आवाज जा रही है? आपकी आवाज इतनी क्लियर आ रही है जैसे लग रहा है बगल में बोल रहे हैं जी। सब ठीक। आप सभी लोगों को प्रणाम और सादर अभिनंदन और नतमस्तक हूं मैं आज, क्योंकि आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जिसे दो नामों से जानते हैं। जो लोग बंगाल संप्रदाय से हैं वो आज राधा अष्टमी कहते हैं, जो सामान्य रूप में है दुर्गा अष्टमी के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे बड़े प्रिय जो मित्र हैं राकेश जी ने बताया कि आज बड़े शुभ मौके पर बाई चांस ये हुआ है। तो खुद वो ज्योतिषी है, इसलिए कहीं न कहीं इनविजिबल जो एक शक्ति है उनको हुआ, तो इस तरह से ये तिथि
मंगलमय करने के लिए आज जो है शक्तिपीठों की उपासना के रूप में मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मोस्टली मैं इंग्लिश चलेगी या हिंदी? दोनों मिला करके चलिए सर, दोनों का मिला करके, ऐसा कि आप तो दोनों भाषाओं में आपका सब ठीक है, ठीक। तो यह एक छोटा सा प्रयास है जो हम लोगों ने अपने देखने की कोशिश की, और हम लोगों ने विगत 4 दशक में एक जो है किंग्सले डेविस थे, जिनको फादर ऑफ गॉडेस स्टडीज कहते हैं इन इंडिया, जिनकी मृत्यु हो गई, करीब 20 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि पूरा भारत जो श्रीमद् भागवत के आधार पर उन्होंने लिया था, और उसकी व्याख्या किया कि पूरा भारत माँ के रूप में कैसे, और उन्होंने एक कंसेप्चुअल फ्रेम दिया था सेक्रेड ज्योग्राफी ऑफ देवीज, जो उनकी फेमस किताब है हिंदी गॉडेसेस में, उसमें पूरा चैप्टर है। तो ये कल्पना जो है वहां से लेकर, वो हमारे अभिन्न मित्र भी ले रहे हैं, साथ साथ हम लोग कई जगह देवी यात्रा भी किए हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये जनरल एक बात बता रहा हूँ, और इसके पहले मैं सादर नमन करता हूँ राकेश पांडे जी का, जिन्होंने आज इस शुभ मौके पर मुझे याद करके एक तरह से निवेदन नहीं, आज्ञा में दिया। हमारा संबंध ऐसा है, और कैथी वाले हैं, और कैथी मेरे लिए बड़ा पूज्य। मैं शिव के कई ज्योमेट्रिकल चीजों पर काम किया हूँ, जिसमें कैथी केंद्र है। यहाँ विजय राणा जी भी आए हुए हैं, अभिन्न मित्र जो हमारे लंदन से शामिल हुए हैं। काफी लोग विदेश से भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिनको पता चला है तो लोग जुड़े। तो ये सब अधिकांश लोग इसमें से हिंदी जानते हैं। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ इस रूप में। There are two conceptual frames. One is that sacred, the time, the moment, the thinking, when you try to link with the earth, not as a planet, as a mother, जो अथर्ववेद के पृथ्वी सुख से माँ पृथिव्याम पुत्र, ये हमारी तीसरी माँ है। पहली माँ गर्भ माता, दूसरी माता गौ माता, तीसरी माता जो पृथ्वी है, चौथी जो है गंगा है, जो शांति है। This idea goes from the Rigvedic tradition, and then which has flourished all India level, and that's why the whole India become just like a mother. I will show you some of them. गायंती देवा के लिए गीत गानी भागवत पुराण से है कि पूरा के पूरा भारत की माँ का रूप है, जिसे और वंदे मातरम इत्यादि में बाद में लिया गया था स्वतंत्र आंदोलन के काल में। तो ये तो एक भूमिका के रूप में मैं अभी खोले हुए अपना प्लीज अपना म्यूट कीजिए, नहीं तो आवाज बार बार इको कर रही है। Okay, so let me just first give you the glimpse of all India level. It is based on Gita Press तीर्थ अंक और शक्ति अंक। तो ये क्लासिक माने जाते हैं इन हिंदी, एटलीस्ट even in English literature, nowhere you can find this type of book. They are something like compendium of all the tirthas, and especially that is the Shakti goddesses. So we have tried to see that how many standard goddesses based on the Puranic sources as classified in that Gita Press Tirthanka and Shakti. Then later on I will talk about how that is linked, how this geography concept is linked. So we have defined 10 attributes related to geographic context: river, river bank, river confluence, sources of river, lake, mountains, sea coast, high mountain, hill track, hilly cave. This is based on the description, okay, how they are described and where they are located. So what we find is, sometimes we say that in Indian mystical tradition, so many things parallel going on. What a famous physicist used to say, that a time will come people will realize the different form of physics, close to metaphysics, already existing in different form in Indian context. So like you can see the river context, about 70% of the goddesses sites, Devi sites are linked to river bank. Now you can see in your own body 70% is water. If you can see the whole earth, 70% is water. So this is just like parallel situation, that how this motherly energy linked to geographic context. Then other is linked to other form of the water context. So this is just giving you a glimpse, and later on I will show you the map. The second classification is, which is very common, 51 or 52.
According to different tradition, it varies like a Yogamalaya Tantra Shastra, I will cite that. Sometimes 51, sometimes 52, whatever you count, no big deal. This is all related to the sound phenomena, the letters expressing different power. In Devanagari, you'll find 51 or sometimes 52 letters and all represented to that. Long back, that was around 38, 39, when that book Shakti Ank was published. Karpatri ji, Swami Karpatri ji tried to link this whole sound phenomena with the Shaktipeeth, and that's how we prepare that every site having some particular sound, and this way you try to link the whole body phenomena, and then you project this for the whole India. Okay, so this is just giving you background. Now let us start in historical perspective, how this whole description has been conceived in Indian context of geography. So we find that altogether, earliest description we find coming from the tantric tradition. Kujamatra Tantra, that describe, and then we can find them later on it has been followed in other tantras also. So that gives a perspective that altogether that is a triangle. First making the triangle, it is a symbol of progeny, center of India. Just like in the map you can see the red line. So that is the four side. The northernmost, the western is Uddiyana, then Jalandhar, and then the two side Kama Rupa or Kamaksha, what you call, and the Purna Rupa Maharashtra, that is Purnagiri. This description having two versions about the textual tradition, and this whole thing has been published by Mark Dostoevsky in his famous book of 4 volumes based on the Kujamatra Tantra. So that described that if you can see like this, our basic conception was that these centers were epicenter. ये केंद्र ऐसे रहे हैं जो खास तरह के एनर्जी, खास तरह के geographical condition में ऋषियों द्वारा परसीव किए गए, रिसीव किए गए, रिवील किए गए, और फिर वहां पर लेटर ऑन कोई एक मंदिर का रूप ले लिया, कोई एक शेप ले लिया, या राजा महाराजा जो आए धीरे धीरे मंदिर का रूप ले लिया। लेकिन ये कहना यहाँ पर मैं जोड़ना आपको चाहूंगा, जो ऑलरेडी वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं, कि इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम 10वीं शताब्दी या उसके पूरब के पुराने मंदिरों को जाते हैं, तो ये मंदिर कहीं भी नहीं बने हैं जैसा कि हम सोचते हैं कि कोई जगह या किसी ने उसको स्पॉन्सरशिप दे दिया बन गया, नहीं। ये उल्टी ट्रेडिशन है, और सबसे पहले इसका श्रेय देता है मर्शिया इलियाडे को, जो 1958 में किताब निकली कंपैरेटिव रिलीजन, उनकी पैटर्न्स ऑफ कंपैरेटिव, वेरी फेमस बुक, एंड एट लीस्ट 20% ऑफ द मटेरियल बेस्ड ऑन द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। तो उसमें वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि ये सभी कोई शक्ति के केंद्र थे। Shakti can't be translated like energy, like Devi. No, Shakti is something universal energy force, you can say something like that. और वही कालांतर में डेवलप। तो ये बातें जो आप मैप के आधार पर ही देखते हैं, तो ये बैठती है बात की जो 4 से स्टार्ट होती है, उज्जैन या यू या ओ दोनों शब्द प्रयोग होते हैं, पूर्णगिरी, कामरूप और जालंधर। और फिर जो है इसका विकास होता है, जिसको हम हैंस बेकर ने डिस्क्राइब किया है कि इस तरह से ट्रायंगल को जोड़ करके पूरी बॉडी फिनोमेना को सबसे पहले ये टेक्सुअल ट्रेडिशन में आता है। 3-4 और हम आपको ग्रिम से दिखा रहे हैं डिफरेंट तंत्र में कैसे हुआ, और तंत्र और शुद्ध सनातन हिंदू तंत्र में क्या अंतर है आगे हम आपको मैप से दिखाएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, और कथा में थोड़ा सा डाइवर्जन कैसे होता है। तो इसकी जो बातें की जा रही है, यदि इस मैप को आप देखें जो दूसरे तंत्र के आधार पर है, तब आप पाएंगे कि साउथ इंडिया का जो निचला पोर्शन है उसमें कोई साइट नहीं आती है, सभी स्कैटर्ड है, 34 साइट्स। This is longer, it is not like my research, this is so the whole group research, it took more than 2 decades of work, and maybe credit that to Mark Dostoevsky, who has done a lot of work in the field, and we have assisted and helped him to develop like this. तो ये आइडिया ये चलती है क्रम में, मैं क्विकली लेट मी पास ऑन।
देन दूसरा योगिनी तंत्र से या योगिनी हृदय तंत्र, दोनों नाम से चलते हैं। और ये पहली बार ये डिस्क्रिप्शन में आता है कि these are related to alphabetical sense of Devanagari and it has phonetical all these sound phenomena linked to the power. Here, if you follow Frijo Capra, what he used to say that the whole life started in the sound, and the sound having the different character linked with the light phenomena. And that's how the concept of Devis, that's the concept of the Shaktipeeth started. And started in, you can say, pre-Rigvedic, if you follow the Western terminology, then well established in the post-Rigvedic tradition. So Agni Hriday having two versions, the common version and then you find close to the Rigvedic tradition. So this is another example that covered whole of India, and this will define the 50 or sometimes 51 sites in the whole body, and the word has been used just like Bharat Desha, which is the whole country as a body phenomena. Then Amba Salman, that is one of the basic things which is linked to the Skanda Purana version. The Skanda Purana version you will find interpretation of Kashi Sutta. I will later on cite you example. Then the basic text has been used like this, which also defined just like Yogini Hriday, this Amba Mansa Samhita, that it is also around 50. There are 3-4 places variation of the sites according to the local and regional tradition. This was the one perspective to see that how that started, the number 3, then 4, and then it is coming like that, and then later on it reached to 108. Very rightly, as Professor Rakesh ji said, that all India level you go, everywhere you find Shaktipeeth. So we always try to say there are 3 levels. The Pan India level, that you can say very ancient, they have well defined, well described, well mythologized description in the ancient text. Then you can find some broad regional level, then you find local level. The micro, meso and macro level division always linked with the Shakti tradition. Here coming some example, just what we say that how the river concept, what I have already referred, the 70% sites are linked to the direct river or site of the river. The concept coming in what we try to terminalize this Gangaization of Indian culture. Ganga as the liquid energy of the cosmic force. And that's how there are regional level Gangas. Uttar Ganga, that is Mandakini. Then you have Pura Ganga, that is Mahananda. Then you have Madhya, that is central, Godavari, then southern, like Kaveri, the western, Narada. And this way the whole description, if you can read the Mahatmya, that started 12th century to 16th century textual tradition of these rivers, they always compare that particular river is elder sister or older sister or replicating Gangaji. And this way, if you can plot that and then try to link with the Kumbh tradition, Kumbh Mela tradition, which is now part of the UNESCO Intangible Heritage, already inscribed in 2019. Then if you can plot that and plot the site of like Haridwara at Gangaji, that is Haridwar, then the Kumbh Mela held there, then in Prayag, then in Ujjaini, then Nasik, and this way again you find Kumbh Koda miniature level in the southern India. So there 4 sites are mainly highlighted. Then the 5th Kumbh Koda, that is also representing the same but regional tradition. This way whole India has been linked like this. This way we say that the idea of Kumbha linked to the water force and energy, and then making whole India through the or under the, you can say, force of Gangaji, and that's why to be called, it is just like Gangaization of Bharatiya Sanskriti. And in the lower side you can see the different famous paintings, Bharat Mata, then Gangaji, here is how Gangaji is represented, that's Bankim Chandji painting. Now I coming to the popular way that most of us we know that here are 2 traditions. First let me say Sanatana Hindu tradition that says that whole story of how Sati committed suicide just jumping in the fire, then that body Shiva will be carrying and he became abnormal, then
Vishnu used his Sudarshan Chakra, cut the body, and wherever the body fallen down, then ultimately then Shiva became cooled down, and that's why we find 51 Pithas. So these are the sites related to the body of Sati, the earlier form of Parvati, in dead form. But if you can read Kubja Mantra, this Tantra, they say in a different way, that how that goddess body will be dead. It was not dead. It was all alive. This is metaphorical way. It dead like just like Shavasadhana. This is just like you can say highest level of yoga. So body was alive. That is a different, very close by but different type of say. And that says that Shiva was moving. So wherever he get that particular way to link with the Mother Earth, he stopped. And then that body touched that place. So the place are the same, but the story having two traditions. One is dead body is going to link with the Mother Earth to have the energy, and according to Tantric version, the description says that no, it was already alive, so two forces meeting together to make something universal. तो इसको इस रूप में कहें कि भारतीय जो हिंदी परंपरा के अनुसार है, उसमें सती की प्रथा चलती है, और इस तरह से सती के अंग जहां जहां गिरे वहां सती। लेकिन तांत्रिक ट्रेडिशन ये कहता है कि नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो डेड हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो कॉस्मिक मदर है। तो शिव जहां जहां जिस रूप में डिस्टर्ब होती थी, उनके बॉडी में सेंसेशन होता, वहां वहां रुकते थे, और वो बॉडी वहां लिंक करके वो शक्ति वहां ट्रांसफर होती थी। बात दोनों की एक है फिजिकल सेंस में, लेकिन दो तरह से अभिव्यक्त किया गया है। तो सोर्सेज हमने 51 को ये लिया के साथ साथ आप देख सकते हैं देवनागरी लेटर्स में 51 जो है लेटर्स हैं। मेन जो जनरलाइज रूप में हमें बात करते हैं, योगिनी हृदय है, तंत्रसार है, तंत्र चूड़ामणि है, मंथान भैरव मंत्र टीका है, रूप शिवा का एनालिसिस है, फिर अम्बा स्तंभ संहिता है। तो ये जो जिसे डीसी सरकार ने सबको मिला के एनालाइज करके, और लास्ट में जो उन्होंने लिया है कि पहले 3, फिर 4, फिर 8, फिर जो है 51 या 52, and then ultimately is reached to 108. So that is the framework of all the distribution phenomena. Here is the list you can see, which is the most common list we find. The Shaktipeeth in India, then we have in different texts you find that this sequence will be changing, and Swami Karpatri ji has corrected that with some adjustment of the metaphysical interpretation of all these sites, and then in a sequence he has put, I have used that sequence, A, I, E, U, U, A, O, and then Anga, Li, Tak. If you have put that, so 1, 2, 3, 4, whatever you see, you can put parallel to this, and then you try to analyze in this way. Like most important, you find two sites are very special. The one is, that is Himalayas, that is in Pakistan. Okay, and already that is active. It is not like that in spite of all the trouble going on there. And that is related to Mentula, that is the brain, and the goddess is Bhairavi. So it is 250 kilometers west of Karachi. The other is Kamarupa, Kamaksha, you all know that, and that is the center. It is just like what we call in architecture, it's axis mundi, the center from where the generation start, the progeny cult, or you can say the epicenter of the energy. So these two are at two sides, and if you plot the map, then you see that latitude is the same. I will show you that map. That is a unique thing, that how it has developed. See, it is nothing like that only some persons have tried to establish something. Now we have some scientific method to see this, then that is a great mystery, and credit goes to rishis, our great rishis. What my teacher, famous astrophysicist, used to say, they were not rishis, they were the great scientists in their own way, what you call as rishis. So that was the tradition like this. So just to give you the whole list, I have sent the paper to Rakesh, you can find the whole list and all that published thing. Is the way just to give in that each and every related to a particular part of the body, then always Devi having a relationship with the form of Shiva. So fallen body and the other form of
Shiva meet together, so two forces meeting together, so always the energy is going to be generated and you can feel it in that way. This is the way. Concerning Varanasi, that is considered as a center of the big eyes. Okay, sometimes it called earring, and that's how the Vishalakshi, the big eyes of that. And then other eye of mother was just like fish, and that's how we know that is Meenakshi. This is the way, friend. So whatever list you have seen, we have plotted like this. This is not simple map that we have taken to proceed, and this is high resolution GPS, and that was our National Science Foundation US project we have done for 7 years, and credit go to John King Marvel that will help us. So decimal 4 digit, and for each site about 300 to 400 times measurement made, and then we have converted it on a simple map. The result is something unique. You see, that's what I said. You see left hand side, you can see my cursor, Hinglaj, and then you can see right hand side, Kamakhya, Kamarupa, that is exactly on the same latitude. Now you see here, Sri Parvat and then Kanyakumari, stateway line is like this. State. That is exactly the same. And it is about 90% correct in terms of latitude and longitude, what we call it orientation in a particular way. Okay? This is one thing. This is broadly discussed under cultural astronomy. Now you can see the two parts of India, if you can link those lines together, you can find that this right hand side you can find that a little bit bigger triangle, and that is this side is a little bit smaller triangle. Now you read the Kunjamatika Tantra, that says that the progeny center, the portion of that yoni of mother not having equal division. We don't know how they have written this. This is something unique thing, that how they have tried to say like this. So somehow some technique was already there. We don't know what was that. The way they have described, now with the scientific analysis, we find there's a lot of very close similarity. We find in most of the cases more than 75% of the similarity, what is described metaphysically and what is now measured in physical terms using modern scientific instrument. Except two sites, we find all the 51 are existing. Now some two centers they claim, oh, this is the center, but unfortunately we have not proved it. So out of 51, 41 in India, 4 in Bangladesh, 3 in Nepal, 1 in Pakistan, 1 in Sri Lanka, 1 in Tibet. This is the way it is. Mansarovar itself is dirty number 22. Okay, we are not talking the political thing that how China and all these things. Okay, leave that. Now comes we find the regional level, very rich tradition we find. Bengal is unique. We find two great regional tradition. One is Bengal and other we find in the Gujarat and Maharashtra linked together the whole tradition like this. I am citing only this example that how it is going to be linked like this. So this we call what Dynamic used to say spatial transposition. It means taking the regional or local level tradition and linking with the pan-Indian tradition and describing in a manner that anybody, the devout Hindus, they feel that if you are not reaching to that particular place, by this regional level or local level, you can get the same thing. But you feel that you are not reaching to that, then you have to perform a particular ritual. एक ट्रेडिशन है कि जब भी प्रादेशिक या स्थानीय लेवल पर जो देवी साइट है जिसको हम लिंक करते हैं संपूर्ण भारत पर एक यूनिवर्सल के रूप में, तब हम समझते हैं कि हम तो वहां नहीं जा पा रहे हैं लेकिन आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन मन में एक गिल्ट जरूर रहता है कि मैं किसी न किसी में गलती या पाप कर रहा हूँ. उसके लिए हमारे शास्त्रों में बड़ी अद्भुत एक चीज है जिसको हमारे गुरु नील सुबुच्चो, जो जिन लोगों ने बनारस का डीप अध्ययन किया हुआ सब उनको जानते हैं, his work is unique in बनारस, तो उनका कहना है कि दुनिया घूमो लेकिन ऐसा ट्रेडिशन भारत को छोड़ करके कहीं नहीं मिला, जो बाद में डायनामिक उसको स्पेशल ट्रांसपोजिशन के रूप में उसको व्याख्या करते. तो ये है कि हम शुरू करते हैं जिसे लोकल टू ग्लोबल
वाली जो बात है, तो ये बंगाल ट्रेडिशन है जिसको फिर लिंक करते हैं, तो दोनों ट्रेडिशन साथ साथ चल रहे हैं, नो क्लैश एट ऑल. वन इज अ पैन इंडिया ट्रेडिशन एंड देन इट्स अ रीजनल ट्रेडिशन, नेम विल डिफर, but the explanation is going to look from local to regional, then regional to universal or pan India tradition. This is another way that how the that is the Ashtapitha and then later on added to further addition by Shankaracharya 8, and then later on the whole tradition will be linked to 18 such sites. And now Government of India 3 years ago, they have made a special plan by the Department of Culture that we should prepare a map to develop Shaktipeeth pilgrimage to the whole South Asia. This is one of the part of that one. At regional level, we can have this here Adi Shankaracharya, the Bengal tradition, then you can say India level tradition, then you can say whole South India level tradition that has been now published in a form by National Literacy Organization, Government of India, Kolkata. What I have cited, micro level tradition, local tradition linking to the universal. So it started from locality, then regionality, and then going to global level, pan-India level. What we said, micro level, meso level, and then macro level. Micro is one unit, meso is earthly level, and then we say macro, that is whole terrestrial level. This is unique example. Of course, this is a recent one, just opened about 8-9 years ago, 10 years ago, 2001 to 2002 it was opened. That is a 51 Shaktipeeth temple. 51 Shaktipeeth मंदिर एक ही में है. ये जो है लखनऊ में है, ये नंदन वन पक्षी का तालाब लखनऊ, जिसमें 51 शक्तिपीठ पर जा करके 20 साल लगा है. इसमें कुछ भक्तों ने जो इन्होंने बनाया उनकी मृत्यु हो चुकी है लास्ट ईयर, उनके लड़के और वो यात्रा किया और सब जगह से उसका कुछ पोर्शन लिया. मिट्टी हो सकता है, फूल हो सकता है. जब उन्होंने पूरी बात बताई कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 51 पीठ को एक रूप में बनाएंगे तो आप हमारी मदद कीजिए, तो उन लोगों ने यहाँ से कुछ उसमें से कोई चीज खुरच के या मिट्टी और दिया और फिर उन्होंने वहां बना करके उसको उसमें जोड़ा और कहा कि ये उसका प्रतिरूप है. इट इज अ रिप्लिका बट हैविंग ऑल द ब्रीथ. इसे प्राण प्रतिष्ठा का एक अद्भुत रूप है. जो आप उसे देखेंगे तो पूरे आर्किटेक्चरल स्टाइल और सिंबलिज्म पर बना हो. 3 लोक का, फिर पंचभूत का, फिर 14 भुवन कोश के 14 पिलर. इट इज समथिंग यूनिक. दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल. व्हेन यू गो टू लखनऊ, इट इज हार्डली 30 minutes by car. You can reach to that and you can see that this is an example of micro level development of Shaktipeeth. Okay, so now that expanded the same map, what first I have shown you, that 3 at the center and then 1 added, that's how all together that 4, and then in the time frame later on it developed to 108. So if you can talk like Vindhyachal, the regional level it is very important, but the first category 51, if you can talk, nowhere Vindhyachal is mentioned. But the stories are in a different way. In different Puranas, we have all the story of birth of Lord Krishna and then going on how the goddess came like this. But in course of time, when 108 developed, then that became a part. This was a wonderful example that in physical sense, to relate the 2 broad concepts of the whole cosmic evolution, what we call it, space and time. When space and time integrate, the whole progeny starts. So now let me little bit like explain that. Like most of us having rosary माला, चाहे तुलसी की हो रुद्राक्ष को, सभी 108 ही होती हैं. और अधिकांश वर्ल्ड ट्रेडिशन में थ्रू आउट द वर्ल्ड आप पाएंगे जहां भी रोजरी प्रयोग है, चाहे शिंतोइज्म में चले जाइए, चाहे तो कोरियन एंशिएंट वाले में जो 6th century का ट्रेडिशन, वहां भी 108 की माला होती है. व्याख्या अलग अलग हो सकती है. हमारी व्याख्या इस तरह से है जो मर्शिया इलियाडा ने पहले व्याख्या की थी. स्पेस फेनोमेना जस्ट वी से पहले हमारे 4 दिशाएं हैं, फिर उसके बाद उसके बीच में है जिसे हम अष्टदिक कहते हैं, और फिर वो मिल करके केंद्र पर घूमती है. 4 + 4 + 1, 4 मुख्य दिशा, 4 कार्डिनल दिशा, और सब तीर को जोड़िए सेंटर में मिलेगी तभी वो घूमेगा. चक्र हो गया 9. एंड 9 देवियों की हम दिखाएंगे आपको बाद में उसका चित्र.
नौ देवियों की बात हो गई, नौ ग्रहों की बात हो गई। तो ये है नौ, जिसको हम कहते हैं दिस रिप्रेजेंट स्पेस, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस इज नंबर 9। देन कम काल, जो समय का जो अंतराल है। तो हमारे यहाँ जो वर्णन चलता है कि 6 ऋतु वर्णन चलता है अथर्ववेदिक है अनुसार। सबसे पहले आप फुल डिस्क्रिप्शन दिखाएं 6 ऋतुओं का कैसे वर्णन चलता है। तो हर ऋतु में एक अप फेज होगा, एक डाउन होगा, जिसे हम पक्ष कह सकते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो गुणा कर दीजिए, 6 गुणा 2 कर दीजिए, 12 हो गया। इस तरह से 12 राशियां हुई, 12 मंथ हुए। तो बाद में वो देखा गया कि कहीं गैप हो जा रहा है, चूंकि हम लूनर चंद्र माह जोड़ते हैं, तो बाद में अधिमास की बात की गई, या मलमास या पुरुषोत्तम मास की। वो इस समय का विषय नहीं है। अब जरा दोनों को जोड़िए, गुणा करिए, दोनों को इंटरेक्ट कराइए। 12 into 9 is equal to 108. And this 108 is so symbolic now that a great physicist and electronic engineer Subhas Kak is explaining the whole thing, how the earth distance related to the sun, then sun having radiation, so many things all related to 1/8 number as a symbol. So this was the thing, that how this has been converted into motherly form, and then you see the map of whole India. Whole India has been converted into the symbol of 1/8. And if you can travel all these, or mentally you can think like this, link yourself, मन की शक्ति से इसको जोड़ करके उस रूप में अपने आप को ले जाए उस स्तर पर, तो आपने ब्रह्मांड के पूरे चक्कर लगा लिए और माँ का रूप में आप मिल गए। ये थी ट्रेडिशन, इस तरह से विकसित की गई थी। एक उदाहरण अब माइक्रोवेव पर हम ले रहे हैं। अभी आपने ब्रॉड देखा, अब जरा लोअर लेवल पर आके देखिए, वो है विंध्याचल। 51, if you count 51, which is the most standard till 12th century, and later on you find 108, before that it was 3 or 4. Here is a typical example of Vindhyachal, which is a wonderful example of spatial transmotion or converting, started from macro to meso to micro. The 3 main goddesses having 3 temples here. What we call रूप, 3 रूप में है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, अष्टभुजा, विंध्यवासिनी एंड काली। तीनों 3 गुण के सत्व, रज, तमस, virgin, beautiful, terrible, amorphous, benevolent, angry. So you see the whole series. I have taken only one example. We have 26 such elements of all the 3 forms of goddesses linked together, and then that territory has been developed. Generally we say that it started from 7th to 9th century in historical term. It is okay, but that was deeply rooted into the ancient past, and nobody can simply date it that what is the date. Whenever we find example, visuality, measurement, description, or some notion, then we try to set the date, but no one can say when it is started and how it has been started. This is the one example. This is the way. So whatever you have just seen, this, keep in mind, these 3 whole series, now I am converting, taking the aerial photograph and high resolution GPS, and this is unique in whole India. Look like this. The line you see, this is nothing like my drawings. No. Very high resolution, published in International Journal of Astrophysics. That this is unique thing. What we say that mother is represented with the triangle, so Ashtabhuja, Vindhyavasini, then Kali, triangle, exact. And then covering triangle, light bluish, ash color you can say, Rameshwaram, Mukteshwara, Banakhandishwara. Then triangle over triangle, cross, and then that became a hexagram, and center is, जो इसमें और मेरी स्लाइड है, दूसरे में मिस कर गया लगाना, सेंटर में जो है, वहां जो है आनंदमयी माता का वो केव है। तो एग्जैक्ट सेंटर दोनों ट्रायंगल का सेंटर आप ले तो एक यहाँ पर आएगा जहां हमारा कर्सर घूम रहा है। ये जो वर्ड है त्रिकोण, ओ के ऊपर जरा सा जाएंगे तो ये आएगा। जब हम इस सबको जोड़ दिए तो इस हेक्सागन में जो ही वो डॉट हुआ, नाभि बन गया, और यहीं से शुरू हो गया यंत्र। यंत्र 108 प्रकार के होते हैं और सबका सुपर वैश्रीय एक उनमें से है विंध्याचल यंत्र, जो बगल में आपको बना हुआ है। So in the lower side you find the basic design of the Vindhyachal क्षेत्र यंत्र and how physically it exists in the landscape. This is nowhere existing. Whatever date you want to
say at least we have done this work for 50 sites, nowhere that symmetry is there. So this wonderful symmetry, orientation, and this power generation system, if you can see the whole topographic feature, this is unique. I will show you 1-2 slides like that. And then it had been converted into pilgrimage tradition. इसी को तीर्थ यात्रा में बदल दिया, इसी को शक्ति में डिफरेंट कथाओं में बदल दिया। आपकी जितनी भी पहुंच होगी उतना आप ज्ञान ले सकेंगे, प्राप्त कर सकें, अदरवाइज फिजिकली तो आप जुड़ जाते ही हैं। ये एग्जाम्पल है यहाँ भी, लेकिन बेस है गंगा जी ही बेस है, और वो विंध्यवासिनी महालक्ष्मी से ही जुड़ती है गंगा का। फिर जो आप हिल की ओर जब जाते हैं तब अष्टभुजा में जुड़ते हैं, और हिल और दोनों के बीच में जब गर्त में जाते हैं, जैसे पताल में जाते हैं, उसके अगल बगल स्प्रिंग्स भी हैं, तो काली का है। ओके, this we have just giving you simple calculation that how we have done this, all the sites, just to know that this is latitude longitude, not that general calculation. This is based on lower side. It is written that in 1998 by Mr. John Kim Malvin, who was the NASA scientist, and he was having the project, I was serving as assistant. So this way, just to give you a calculation to justify what I am trying to say. Now you see side by side. Here in the left hand side you will find that all the 51 Shaktipeethas in a different miniature form represented in Vindhyavasini Yantra too. And in Sri Yantra you will find all the cosmic designs are so perfect that even one drop here and there you can change, no way it will maintain its symmetry. A lot of work already done on Sri Yantra. This is the one example how the 51 Shaktipeethas at different sites and with the different shrines are images represented, and core one is going to be Mahalakshmi, and that is the Vindhyavasini. Just click, you see this again. Another example. This is the regional level example. Now you see micro level example. Within the temple of the three temples, you see Ashtabhuja and Vindhyavasini and then Kali. Within that temple, there is symmetry of the triangle. Here you can see this. Within that, this is the, generally you go there, here. That is the Vindhyavasini, Mahalakshmi. But there is also Ashtabhuja and Kali. And you see this angle, if half that this line you can draw, then you can reach to the same side. Then here you can draw a line, half of this like this. We have done this, and then we find that, my goodness, who has done this? How they have brought us such measurement of architectural design, and they have said there was something unique, that tradition in the ancient past that was preserved by such great man of architecture and symbolism, and great rishis. This had been preserved. So here is a humble suggestion. Whatever modifications, innovation, changes you are doing, but don't disturb that orientation, that linkages and symmetry of the thing. Then the power will be lost, and the whole tradition of such great knowledge will be in trouble. That is the most important thing we have to learn from this. Now in stone, the same yantra in the stone. Here is that temple complex. Here also you will find the same way, the three levels, what I said. Mahalakshmi, Mahakali and Mahasaraswati within that. This is the Kali core. The same thing you will find here is also within a triangle. So if you are not going to other temple, you are going either Vindhyavasini, either Ashtabhuja, either Mahakali. You remember all the three, and you can visit the miniature form of three, and you can get the merit. This is unique example how it is befitting to the human limitation. That is the example here. Now, quick glimpse, just to have whatever we have talked, 51. So quickly to have darshan today, just like Hinglaj, Balochistan, Pakistan, you can see that how it is looks like. This is again another version, another side of Hinglaj Devi. Amarnath Yatra, going to, you know that that you all know that Balfani Baba and the whole story, and close by is that goddess, that her throat fell. ये कंठ का थ्रोट जो है ये माँ का यहाँ गिरा था, इस रूप में, इसलिए यहाँ शिव पर्वत रूप में ये कथा के रूप में चलती है। शिव पर्वत, इसकी बात हम लोग कर रहे थे, जो श्रीनगर से उसकी यात्रा की जाती है, और एक्सिस के रूप में सबसे ऊपर ये है, किले के ठीक पीछे है, और मंदिर का शिखर आपको दिखाई दे रहा है।
कामाख्या जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, जिसको हम योनि से जोड़ते हैं, प्रोजेनी कल्ट से जोड़ते हैं, कि ये एक्सिस आर्किटेक्चरल सिंबल वी से एक्सिस मुंडी फ्रॉम वेयर ऑल द एनर्जी लिंक टुगेदर इन द होल बॉडी। तो ये 51 को हम प्लॉट करें तो ये मानेंगे कि ये वो पोर्शन है जहां से सारी एनर्जी की लाइन जुड़ती है, जिसे हम कौड़ी कामाख्या या कामाख्या या कामरूप क्षेत्र कहते हैं। उसी को आप दिखा रहे हैं, ये कैसे पिक्चोरल व्यू में ये दिखाया जा रहा है, जो तंत्र का प्रभाव से शिव लेटे हुए नग्न अवस्था में ऊपर हैं, जिनको छिन्नमस्ता या जो है और देवी के वर्णन में आगे मैं कुछ दिखाऊंगा। ये किस रूप में उनको बाहर भीतर योनि जाके आप नहीं छू सकते हैं, तो बाहर जो एक रिप्लिका बनाई गई है जिसमें उनको महादुर्गा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ आप सिंदूर चढ़ा के उसको प्रसाद रूप में ले जाइए। ये सिंदूर को मान्यता ये है कि ये सिंदूर सिंपल शक्ति केवल नहीं है, बल्कि जब माँ रजस्वा होती है तो उसकी शक्ति से जो ब्लड आया है वो है। तो जिसको भी आशीर्वाद रूप में देंगे वो प्रोजनी की एनर्जी वो डेवलप होती जाएगी, कंटिन्यूअस सीरीज में चलती जाएगी। उसी का डिटेल ये वर्जन की जो है रविशंकर जी के आधार पर, तो संसार में नहीं है हमारे ये शिष्य और ये, तो उन्होंने एक डिटेल सर्वे किया था कि क्या हम प्लॉट करके उसको देख सकते हैं कि सारे जो देवी देवता वहां हैं किस रूप में स्पेस में जुड़ते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि माँ केंद्र में है तो उनका तो पूरा परिवार होगा, विभिन्न रूप होंगे, होना चाहिए, तो रियल है। तो जनरली होता है कि हम समझते हैं कि कामाख्या के यहाँ गए, कामाख्या देवी एक है और कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग नहीं, इट इज होल फैमिली एंड द होल फैमिली इज लिंक्ड विद the different portion of the body phenomena that is called body, and therefore that represents the different cosmic forces all together, making that integration of the total energy. Tripura Sundari, Tripura, Vimala Puri, Jagannath Puri, Trikamala, that is Sri Lanka, Nellore, Kanyakumari, दो रूप में है, that is the new issue Vivekananda rock, and here is also a replica, and the original way, the way it is decorated, that is 11th century full description of Kanyakumari, and just going before you can go to Vivekananda rock, you can go to Kanyakumari, a small shrine, but the image is very, very strong, energyful. Suchindram, Narayani, जहाँ अपर टीथ गिरा था, ऊपरी दांत पोर्शन गिरा था। कोल्हापुर, that is considered to be the biggest temple of Mahalakshmi, Amba Mai, locally called Amba Mai, that is Mahalakshmi, that's how the name, that is Karavira, which later on called as Kolhapur. Little bit of work we have done here. So our interpretation is a little bit, you can say, sometimes confusing and sometimes more expanding in this sense, because this represents 64 yoginis all together, and then meet together to make the supreme goddess, and that is a Mahalakshmi. All they are represented on the wall. So when we try to understand, the local people say they are all that disciple or assistant or serving the mother, but when you can closely watch, then easily you can imagine that is all related to the yogini cult. So it is a wonderful example that one side you are coming with the Tantric tradition and then Sanatana Hindu tradition meet together and then reaching to the very highest level. In Varanasi context, the same thing, you can find lower side of map. We have plotted all the yoginis here. Among the 64 yoginis, only 19 are existing today, but the sites are there. So what we tried to do, sites also plotted, which had been now last, but site was there. Some local people arranging and doing some ritual, rest is going on. And then just to give the idea that here is India level frame, you can find Kolhapur, Mahalakshmi, and then you find the relationship with Yogini, and Yogini has been tried to be superimposed or replicated in the landscape of Varanasi. The Mahalakshmi temple at Ashland, just a modern way, the representation in US, Massachusetts. Ramari, Janasthana, Nasik, Chimfel here. It's a different perspective. Now you see modernity is going to be linked. Tradition and modernity meet together just to make the whole tradition alive.
The moment is that you concentrate yourself in that way to reach, then you're never going to be bothered about what modern things is. You can reach to the lower level. The tongue, Jwalamukhi, and that has a true tradition. Jwalamukhi tradition you can find the Indian perspective like upper portion, and Jwalamukhi tradition you can find in Nepal tradition also, that is close to Muktinath, where also you find the lamp is there. We have done some work a long back, 20 years back. The story is there that we have made survey of the Muktinath tradition of that one. That's why Jwalamukhi, in Indian context, in Nepali context, is more Hinduized version, and you can say impact of the Tantric version. This is a typical example of that I am citing that Muktinath tradition, that how that is linked to the Jwalamukhi tradition of that one. So this is the whole mapping system with the help of our Nepali student and teacher. We have performed the study. Okay, now Kalipeeth, Kolkata. So the either side photograph you can see, then and this old, you can find that is a 14th century painting, lower side, and upper side. From the outer upper side you can take picture how it looks like this, and that is considered to be the longest tongue is there, but in fact the description is the right toes fell here. जो अंगूठे का दक्षिणी ये दायां तो वो यहाँ गिरा था. Srirangam, neck fell here, गर्दन का. Then Harsiddhi Devi, that is Ujjain, elbow fell down. Meenakshi, I have referred, that Meenakshi, that the eye, left hand eye, which was just like a fish. Vishalakshi here, in Varanasi, the big eyes fallen down. That is very rich tradition, that most of the Tamil and Telugu people used to come here, Varanasi, for pilgrimage. They certainly go to perform rituals in the temple of... Now, just to give you a glimpse of all this, how that is going to be replicated in the landscape of Varanasi. The earlier description you find that say that there is a yantra, just like Vindhyachal you have seen. So here are the 6 yantra meeting together, just like 3 form of Shiva and 3 form of the Devi, Mahamunda, Mahalakshmi, and the Brahmacharini. And center is, that is Bhadrakali. When you plot that, and then try to see that this is also making something like a special type of, you can say, the same whole area of the yantra. Now, Yogini, we have plotted like this. What here I already shown there, see that idea. Now, here one by one, to quickly let me, Kshetra Rakshita. We have several divisions. We have 12 divisions of goddesses in Kashi. Here is Kshetra Rakshika, जो क्षेत्र की रक्षा करती है. तो विभिन्न क्षेत्र को इस रूप में डिफाइन किया गया है कि नीचे जो डिजाइन देख रहे हैं कि 8 भागों में काशी को दिया, तो हर की एक क्षेत्र रक्षिका है. फिर केंद्र में है वो अन्नपूर्णा है, जो सबको अन्न देती है. और ऊपर सुपर्व है, जो काली है, सब विनाश भी करेंगी, क्रिएट भी करेंगी, एनर्जी भी देंगी. ये क्षेत्र रक्षिता का वर्णन मोस्टली ये जो तांत्रिक वर्जन पर आधारित है. उसी तरह से फिर ये चंडिका है. जो ये प्लॉट देख रहे हैं इसमें से आधे लगभग समाप्त हो चुके हैं, किसी रूप में दूसरे मंदिर में जुड़ चुके हैं. लेकिन जब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तब ये पाएंगे कि इसकी डिजाइन इस तरह से. इसमें उसमें दोनों में फर्क ये है, इसमें पाएंगे कि 8 + 1 केंद्र हो गए 9, एक ऊपर हो गया 10, इसमें 11 हो गया 11. अप एंड डाउन. तो पाताल भी देख रही है चंडी और आसमान भी देख रही है. आकार एंड पाताल लिंक टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई द होल सर्कुलरिटी इज going like this. Then we have Gauri. We have 3 type of description. Gauri, we have Ashta-Gauri, then 9 Gauri, then we have 12 Gauri, then we have 14 Gauris. In time frame and regional look like this. And this is triangle, square, and then circularity concept linked together, and they're ultimately reaching to 14 Bhuvanikoshida. Dash Mahavidya is also represented in the landscape of Kashi. Okay, altogether, if you can set the whole system to see what we call matrikas also here, Ashtamatrika, then 9, then 10 here. So if you can put on the map contact
and then try to understand what is to understand. That's one of the cosmic geometric sense has been wonderfully explained here. If you can go to 84 Kroshi Yatra, 286 kilometers of circularity, this is nowhere in the world, but not highlighted proper. Okay, thanks to some people that now since last 10 years, the journey has been already alive. All the 96 shrines, out of them 54 are goddess shrines, exactly on the circumference outer. And if you can draw the 4 line like this, exactly this is east-west and north-south line where there are shrines. And such a coordinate and system that all these things, and this type of system, we find some description in the 4th century inscription in Bhopal Museum. Nowhere in the West that was the idea of circularity, triangle, square like this one. So that was a tradition of, you can say, mysticism, but in a way to understand the power of the mother in space and then convert into different geometric forms. This is a typical example. So outer side 84 Kroshi Yatra, and then you find Panch Kroshi Yatra, and inner side is Nagar Pradakshina. 3 levels that will link together. So just example in all together, let us set on one map. Then we find the wonderful things coming up here in the right hand side. Top side you see distribution of all the goddess sign 96. It should be one weight, but many lost or they have been converted, or you can say merged into another one this way. If you can plot on the map, then you find as you go from outer to inner, all they are going to be linked together. And that is the way that Kim Moll will analyze that whatever we are talking with physics, theory of chaos or theory of numbers and theory of equal distribution like this, and that theory says that as you go to the core, all the energy get linked. What is called a self-organized criticality theory. This is beautifully narrated in the paper by John Kim Molwell, my teacher, that here in goddess term, the whole thing is like this. If you can see in that perspective, we can say that this is not only physics dealing with the law of higher level law of nature, but also how human has been linked and then taken some energy from mother goddess and this and that. So this is just to give you an example that other type of conceptual frame one can see. Here one thing also I have to add that many times what happened, there's so much propaganda about Kali. Kali is always verified, oh, drinking blood or gale mein mandamal, oh, what nonsense, आपने खूब सुनाया, हर जगह बलि भी चढ़ने लगी सब कुछ। जरा 2 किताबें जरा पढ़िए, फिजियो कापरा की पढ़िए, किताब पढ़िए ताओ ऑफ फिजिक्स, या ज़कोवू की पढ़िए, फिजिक्स की किताब पढ़िए, ऊली मास्टर, what they have described. They said, my goodness, Kali is the supreme mother energy of creating the whole cosmos. And all this Mundamal is one example I can say. The Mundamal number is 51. And 51 is all sound phenomena. So it is just like that coming to the black energy and converting through all the sound phenomena, the world is created like this. This is the only other way to see metaphorically analyzing through the process of metaphysics and theoretical physics to understand the goddess phenomena like this. Okay, we shall actually a little bit closer here. And Panchkoshi route, so that is one among the 3 world famous routes you will find. Here also this is linked, generally we say all Shiva, but Shiva without Parvati, no way can exist. There are 12 shrines. So for each month, one form of goddess on the Panchkoshi route. So when we say this is Panchkoshi route linked only to Shiva, there is a mistake. You see the real text. And then you can find this is all linked together. So whenever territory is going to be expanded from inner to outer, then replication has been done or spatial transposition has been done in a way that from inner to outer, outer to inner, you can try to understand the holistic perspective of the blessings of the goddess. This is the example like this. This is something calculation and all that, so it's a big deal. Ganesh is also considered here typical. This is nothing like directly related to this, but why I want to say that in Tantric tradition, Vainayaki and Ganeshi, that you find the 9th, 10th century, Prasad Tiwari ji of
the ancient Indian history, not this theory, Jain theory, Jain theory, who has done wonderful work under Vaisham, and in that he explained that. So just I wanted to tell that sometimes we say, just like, oh, this is Ganesh. Ganesh is representing the supreme form of Ardhanarishwara of Shiva. He is dancing like this. And this way, in that motherly form, he is represented in Kasi. This is unique nowhere in India. 56 Vinayak, 56. So all this, you see that Kundalini chakra, ethereal breath system, 7 chakra जो body में है आपको 7 बार घूम रही है, 7 ही layer atmosphere में, तो 7 ही दिन होते हैं आपके, तो so many parallel thing. And then 8 दिशाएं गुणा कर दीजिए 7 into 8. That is 56, and that is start from number 1, that is Badaini, the Ark Vinayak. That is the motherly form which is responsible for putting the energy for the birth. That is the Ark. फिर माँ जो है बच्चा हो गया, तब उसको जो है दुर्ग विनायक गोद में लेके प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से पूरी कथा जो है गणेश को माँ के शक्ति के रूप में चलती है, और लास्ट में जाता है मणिकर्णिकेश्वर विनायक। तो मणिकेश्वर जो विनायक है उनका यह दिया जाता है कि गणेश डांस कर रहे हैं, किसको प्लीज करने के लिए? कॉस्मिक मदर को। तो आपकी कोई भी चीज जो है संदेश, वो पुनः पुनः जो है वाइब्रेट होकर पूरे विश्व में रहते, माँ का यह अंतिम रूप। इस तरह से 56 कैरेक्टर जनरली जब हम समझते हैं कि केवल मेल का वर्जन है, जरा टेक्स्ट पढ़ के देखिए, फील्ड में जाइए, लोगों की कथा सुनिए, खुद आप करिए, यात्रा कीजिए, तब ये पता चलता है कि इसके क्या रहस्य हैं, और फिर वो जो आपको मिलेगा वो शब्द एक ही है, आनंद, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सूर्य is generally considered as a male god, okay, but in Kashi tradition or in many places, there are 12 such places in the whole India, including little bit south, Odisha too, going to, where we find that sun is worshipped outside as a male, but inside female. गायत्री मंत्र किसका है? सूर्य की आराधना है, लेकिन माँ गायत्री कौन है? तो फीमेल है। तो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दैट? तो वो जो मीनिंग निकलती है कि जो सोलर एनर्जी की जो मदरली फॉर्म है, वो शक्ति देती है जिसके जरिए पूरे विश्व को प्रकाश का रूप मिले, और इस तरह से जीवन चलता है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल ये है जो काशी में है। जैसे ये देखिए 14 जनवरी को, दैट इज मकर संक्रांति, the sun rays passing through Yama and then reaching to Samba. Okay, then you can find exactly on 14th of July, that is the maximum sunlight in whole North India. It is measured, that is at Uttararka, this line here. That is close by to city area, Varanasi city railway station area. This is another version. And now you see the just a few days ago, that is Lalahi Chhat has been completed. So right hand side, lower side, you see Chhat Puja. Chhathi Maiya Chale Liya area. And modern way, the Bollywood people have added Suraj Baba Avele, like this. That is completely wrong. No, that was the mother worship. And that is again linked to one example I can say, Lalar Kun. That is of course Surya. You say like this, but see the whole process. That is related to ancient, most alive progeny cult, and thanks to Professor Subhas Kak, who is one of the advisors of Scientific Committee of the Prime Minister, he has already linked it with the UNESCO intangible cultural astronomy alive in practice. This Lalar Kunjal already highlighted, but nowhere any sign of word. Dusri kahani hai, leave that. Okay, Chaitra Shukla 8th, Durga Atmi, just an example I am giving that how Annapurna, who is considered to be the mother goddess in Kashi, worship like this. This detailed version that how we try our work to do to understand this whole goddess work and the whole association and family. This is Durga Kund. So here you find the left hand side the map, and then plotting each and every sites and all the signs, and then trying to narrate how this whole story is linked together. So generally it is not only the mother having 3 levels: the close family, the outer family, then the whole universe is like this. So she is a cosmic, वो ब्रह्मांडीय रूप में है, शक्ति is शक्ति,
शक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल एनालिसिस में यदि आपको देखें, जैसा कि हम लोगों ने देखा 108 को 3 से गुणा के लिए 3 लोक हैं हमारे, 3 mythical rings according to Hindu cosmology, and 108 is the cosmic number to space and time integration. So you can multiply that 108 into 3, 324. So Shiva having main cosmological number of existence 324 and all exist in cosmos. Okay? But Shiva can't work without energy, without female. शिवा के बिना शिव 100 हैं, जो कथा आप जानते हैं. शिवा is Parvati, her goddess. So same way we find 324 shrines of goddesses here, all linked together. Of course, now it is to only 96 and replicated in several ways. So here is one example of Kushamanda, that is Durga Kund. Detail like Lakshmi Kund here. How this year the Soraya Mela has been stopped due to Corona. The Lakshmi Kund. The other side you will find a unique example of the British period. This is 1871-72. That is popularly called a Durgaji temple in Ramnagar area, that is under the Ramnagar Maharaja control. That is a typical example. If you go inside, which is generally not possible, but you can sit there when Pujariji is opening, then for seconds you can go and see. The goddess is just like flying. That is somehow linked to the tradition of Krishna's birth and how that is going to be deities and all this story. Something that has both the tradition linked together. So this is another typical example to preserve the ancient mythological frame. And outside you'll find from all the 18 Puranas, 2 pieces, beautiful pieces taken as example to represent on the wall. So this we have studied and you find, my goodness, this is in terms of miniature form. This temple itself is something unique that you can move around, you know the text, and then you can try to narrate the story. Center is Mother Goddess, popularly called as Durgaji. This is unique example at Rajrappa. That is the only example, a live example, miniature image you can find of Chinnamasta, beheaded goddess, जो महाविद्या में से 10 महाविद्या में से एक है, जो ऊपर अपनी गर्दन काट देती है, और 2 उनकी जो जया विजया दासियां हैं या गणिका है या असिस्टेंट है, वो उस खून को पी रही है. So generally, when you see in a general visual sense, you can go, my goodness, this is terrible. But once you can read that, the full book is written by David Kinsley, then you can try to understand this is a unique sense of whole creation, how it was created. And that has unique temple in Rajarappa, that is close to Hazaribagh. From Hazaribagh, it is hardly 20-25 kilometers. So that is the thing. 2 rivers from 2 types of chemical composition of water meet together. Here lower side, right side, here is the Rajarappa. Okay? And every day, goat sacrifice is happening there. So Maneka Gandhi had tried her best to stop this day, that is political thing, but nothing happened there. And during the Durga Puja, you can find that within 9 days, average one day, we find 120 to 140 goats sacrificed there. There are shops there. So let me show you. Here you can find that outside shops develop here in the lanes. That is the main temple complex. Then outside, during that period, you after sacrifice, that is whole tantric tradition, you can go to these shop and then you can say, I have sacrificed that, are going to sacrifice that, and then there will be mutual adjustment that the meat will be prepared, the fellow will take the head, and then they will provide you rice and whatever you want. This is the way the whole economic system and cultural tradition going on. So the 2 rivers, Damodar and Bharvi, consider the 2 sides of the goddess. That is white side like Gauri, and then the black side Bharvi, that is Kali, meet together at the point, and that's how this beheading concept is there. Many scholars, in terms of scholarship, people say that this was completely a tribal ancient tradition which has been accepted or superseded by the Hindu tradition and is described as tantric. Okay, that is not our concept. This is another typical example, that is Kolkata, that is the Chaneshwar temple, how the whole complex has been developed, and then along this Gangaji,
Okay, how the ghats, how the symmetry. So many times we thought that, oh, architecturally the beautification of the garden and images has been made. But indirectly, invisibly, something special has happened that we find particular orientation, how you take holy dip and going to a particular way, and then you are going to meet something sublime. This is the way the things going on. So now some suggestion about that, pilgrimage and tourism. So we need more pilgrimage. Spirituality should be there, आनंद should be there, not entertainment. मजा लेने के लिए यात्रा नहीं है, ये आत्मज्ञान के लिए मात्र। और यहीं पर बहुत बड़ी विडंबना हो रही है कि हम दोनों को मिक्सअप करके वेस्टर्न टर्म में कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था, तो जिसको हम लोगों ने इसको यूनेस्को के मीटिंग में प्रपोज करके किया। 2015 में ऑलरेडी एक्सेप्ट भी हुआ है, लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं है। Sorry to say. The idea of pilgrimage tourism, so that is based on that SAARC countries meeting to promote pilgrimage tourism in the SAARC countries and especially South Asia. So what they have tried: sustainability, deeper sense and feeling, ethical values, caring for the Mother Earth, global humanism and national integrity. That was the basic frame that how that can be. Like Pakistan we have, Afghanistan border we have, then India itself, Sri Lanka. Learn from the science and to teach through art. This might be a way of loving Gaia. Gaia, the ancient most concept of Mother Goddess, which is very close to our Atharvaveda, the Prithvi Shikha Mahapratibham Pitrovashmi, and ourselves. While there is still time, let us proceed on this path to quest, learning and co-pilgrimage through pilgrimage tourism. That was a message by a scholar coming from science and then now more religious study. Okay, so just to close by here to say that we are human beings, we need both yoga or bhog. Yoga is spiritual bliss, anand, और भोग मजा लेना। और बनारस इसका वंडरफुल एग्जाम्पल है। 13वीं शताब्दी की एक मूर्ति जो है खंडवा पर है, उसको देखिए। बाईं ओर जो देख रहे हैं गुरु जी थोड़े नाट्यकर्म में है, एकदम बैलेंस पद्मासन में है। हाथ में होली की बुक है, जो भी मैंने हो सकती है, जो भी ग्रंथ मानते हैं। दूसरे हाथ में रोजरी है, माला भी फेर रहे हैं। तो एक ही ओर फिजिकल एक्सरसाइज करके कर रहे हैं, दूसरी ओर इसमें से मंत्र को लेकर के मन को कंट्रोल कर रहे हैं, भौतिक रूप में कर रहे हैं। और इस सब की प्राप्ति क्या होगी? ये योग की दिशा है जिससे उनको मिलेगा आनंद। और इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, पाया ही जा सकता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कबीर की लाइन है, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब जरा चेले जी को देखिए, काफी मोटे तगड़े हैं, फैटी हैं। कोई भी बनारसी से समझ सकता है जो पिस्टल यहाँ रगड़ रहे हैं क्या है। आई होप एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस। ये भांग छानने की तैयारी कर रहे हैं, भांग घोट रहे हैं। ये भी मजा लेंगे, शिव के नाम पर कुल तंत्र चलाएंगे, लेकिन इनका मजा क्या होगा? वर्ल्डली प्लेजर, भोग। But remember, yoga and bhog meet together. It is just like जयशंकर प्रसाद की एक लाइन जो है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। We need both, but we have to be very conscious and awaken our conscience to understand that yoga should come always up. Okay, here is a famous line by that physicist I have cited, a living legend. Mystic understand the roots of the Tao, but not its branches. Scientists understand its branches, but not its root. Science does not need mysticism, and mysticism does not need science, but we human beings need both. Okay, so one, two more, and then you have some time for some question clarification. Let us realize and reveal ourselves. Citing Aurobindo, if nothing in all the universe is frail as man, nothing likewise is so divine as he. इस विश्व में सबसे गया गुजरा जो प्राणी है वो मनुष्य है, लेकिन यह भी याद रखिए इससे बड़ा कोई दिव्य भी प्राणी नहीं है। किस अंश को आप जगाएंगे आप वही हो जाएंगे, और ये तभी संभव है जब आप आत्म चेतना का संचार करें, और जिसमें भारतीय ऋषियों ने ये पूरी की पूरी रोड बनाई हुई है। आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। ओके, तो लेट मी साइट गायत्री मंत्र। Om Bhurgo, you all know that. Let us obtain the adorable splendor of the sun. May the spirit inherent, that is Gayatri Shakti,
arouse our minds and wisdom, so that we can serve that for the purpose of global peace and national integrity. Okay, that is the same in a different way. I'm not explaining this 7 horses and all that. A lot of things are written on that. Okay, something more. I am talking a philosopher who studied in Varanasi, and now he is just like a sadhu. Based on his observation, what is our dharma? Nothing like religion, not to be considered like this. This is something like sacred duty, cosmic order, virtue, and the धातु from यहाँ जहाँ से वो ग्रीस है, टू वर्ड. जैसे विष्णु ने हिरणाक्ष को मारने में जो शुक्र का रूप लेकर ऐसे पृथ्वी को बचाया है, वो वर्णन में गाया का है, जो अब पुस्तकों में छप चुका है. तो व्हाट इज दैट? द धर्म ऑफ वाटर इज वेटनेस. जल का क्या धर्म है? उसमें वह जो वेटनेस, जो नमी का रूप है, वो है. धर्म ऑफ हनी स्वीटनेस. जो मधु का क्या धर्म है? तो उसकी वो मिठास है. धर्म ऑफ फ्लावर, फूल का क्या है? उसमें वो सुगंध है. धर्म ऑफ प्लेस जो क्या है, एक जगह के क्या वो धर्म है? वहां जाते ही, जैसे याज्ञवल्क्य की आश्रम का वर्णन, वहां जाते ही आपको शांति मिले, एक अजीब सी चेतना में आप डूब जाएं और खुशी मिले आपको. अब यहाँ आता है, नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर धर्म? धर्म ऑफ कल्चर इज टू सेव द हेरिटेज इकोलॉजी. जो हमारी धरोहर ऋषियों की परंपरा दी गई है, जिसमें हमने समझा है कि मात्र शक्ति से ही सब है, यदि हम उसको किसी रूप में होलिस्टिक व्यू में रख सके, तब ये कहा जाएगा हम भी धर्म को मानते हैं. तो इस एक संदेश और प्रार्थना आप सभी को नमन करते हुए, यहाँ मैं वही नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमो नमः, फिर सबको आपको प्रणाम करते हुए मैं चाहूंगा कि अभी हमारे पास 10-12 मिनट समय है, तो आप कोई ऐसी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं या कुछ मैं कह सकूं, तो आपका स्वागत है. ओके, आपने बहुत जबरदस्त अच्छा व्याख्यान दिया, इतना सांगोपांग ढंग से सब बातों को रखा, और हमारी जो एक हेरिटेज है उसके बारे में आपने बताया. और ये जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही जो भगवती की चर्चा है, ये बड़ी अनंत चर्चा है. इसमें दुर्गा सप्तशती में जो मूर्ति रहस्य है, मूर्ति रहस्य में भगवती अपने को बताती है कि हम हैं क्या, और उसमें वो कहती है कि मैं इस पूरे होल कॉस्मॉस कह लीजिए या इस पूरे वर्ल्ड कह लीजिए, इसका मैं एसेंस हूं, और मैं एसेंस हूं, और उस एसेंस से मैंने 3 जोड़ों को पैदा किया, 3 जोड़ों को पैदा किया. और वो आप कैसे शंकर पार्वती और विष्णु लक्ष्मी और ब्रह्मा और सरस्वती पैदा हुई, ऐसे करके कहती है. और फिर वो पूरी प्रकृति के बारे में जिस तरह से चर्चा करती है वो है ही. इसी के बाद एक देवी सूक्तम करके चर्चा है. देवी सूक्तम है, रात्रि सूक्तम. देवी सूक्तम से देवता लोग पूछते हैं, काशी त्वम महादेवी थी, हे देवी आप कौन हो? तो भगवती कहती है कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च अहमानंदौ नानंदौ अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत. और उसके वेदो हम अवेदो हम शून्यानाम शून्य साक्षिणी, ऐसे भगवती कहती है वहां पर. ये जो एक जगत के एक फिलोसॉफिकली जो शून्य का एक भाव, उसमें शून्य शब्द का प्रयोग करती है, शून्यानाम शून्य साक्षिणी. इस पूरे जगत में शून्य की, मैं शून्य की साक्षी वही हूं. अब इसमें जो एक लौकिक प्रकटीकरण हुआ शिव और पार्वती के माध्यम से, जो शक्तिपीठ की अवधारणा हुई, और इस अवधारणा का जो एक लौकिक पक्ष रहा, लौकिक पक्ष ये है कि कैसे व्यक्ति वहां दर्शन करते हैं, जाते हैं, और उससे उनको ब्लेसिंग्स मिलती है. और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो बहुत सी है, लेकिन ये है कि आप अपना साक्षात्कार कर ले, ब्रह्म साक्षात्कार. जो आपने दक्षिणेश्वर काली और बहुत सी जगहों की चर्चा किया, कैसे विवेकानंद के गुरु किस तरह से भाव में वहां रहते थे, या वो सब पूरी की पूरी जो परंपरा रही,
इन सब से हमारे भारत के लोग और तमाम लोग परिचित हों, इससे हमारी नई जनरेशन के लोग परिचित हों, और हमारे नई जनरेशन के परिचित होने के साथ आजकल बड़ी चर्चा है, हिंदुत्व की चर्चा है कि ये जो हमारा हिंदुत्व है वो कितना उदार भी है, और उदार है इसीलिए यहाँ पर सभी लोगों को कि भाई आप किसी भी धर्म का पालन करिए, भारत भूमि के प्रति सम्मान का भाव रखिए, क्योंकि भारत भूमि हमारी माता के समान है, हमारी भारत माता है। आप किसी भी धर्म का पालन करिए, प्रचार भी करिए, लेकिन भारत माता के प्रति सम्मान का भाव रखिए। ये भारत माता के प्रति सम्मान का भाव ये बहुत ही प्राचीन काल से इस पूरे लैंड मास को या भारतीय महाद्वीप को एक माता के रूप में देखने का जो भाव है, और वो भाव बड़ा डोमिनेंट भाव रहा, स्वतंत्रता संग्राम के दौर में रहा। तो आज आपने जो पूरी व्याख्या किया, हम लोगों को दर्शन करा, हम लोग बिना गए ही उन सब स्थलों के बारे में चर्चा किए, और जिसे कहते हैं पवित्र हो जाए, कोई चर्चा हो तो कोई पवित्र हो जाए, इन सब चर्चाओं से पवित्रता प्राप्त हो, और निश्चित रूप से कोई कितना हो कष्ट हो, परेशान हो। अब इसकी बड़ी अंतर कथाएं हो, जो आप जानते हैं, और भारतीय राजनीति में वर्तमान में भी पहले भी इन सब देवी स्थलों का कैसे कैसे कहानियां हो, तो बहुत लंबी कहानी है। कामरू कामाख्या की क्या कहानी है, कैसे लोग जाते हैं, ज्वाला देवी की क्या कहानी है, तो सब हिंगलाज भवानी की क्या कहानी है, तो सिर्फ दक्षिण में मीनाक्षी की कहानी। तो इस तरह से पूरे भारत का एक जो समावेशी संस्कृति है, जिस पर समावेशी राष्ट्र खड़ा हुआ, समावेशी राष्ट्र उसको कहते हैं जो सबको एक साथ जोड़ सके। तो भगवती सबको जोड़ने वाला एक हमारा जो नरेटिव है, हमारी जो कथा है, उसको आपने बहुत अच्छे से कहा, और तमाम बाहर से और हमने हिंदुस्तान से, बनारस से लोग इसको ज्वाइन किए, उसका लाभ पाए, और ये आपका लेक्चर जो है ऑलरेडी हम लोग उसको रिकॉर्ड भी कर लिए हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन कर लिए हैं किसी भी कारण से, तो उसको सुनेंगे, और वाकई जो है आज के पवित्र दिन जब देखे कि हमारे प्रधानमंत्री एक विश्वविद्यालय का जो है वो शिलान्यास कर रहे हैं, डॉक्टर जो महेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता उसी आपके हिंगलाज भवानी के इलाके से 1915 में भारत को स्वतंत्र करने को डिक्लेयर किया वहां से। और तो आज बड़ा ही एक शुभ दिन पर इतनी बड़ी अच्छा चर्चा हुई, और पूरे भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में चर्चा हुई, ये बड़ा अच्छा रहा। और हमारे विभागाध्यक्ष महोदय आज हमारे यहाँ ICHR के सेक्रेटरी आए हैं, तो नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको स्वागत कर ले रहा हूँ, और स्वागत भी कर रहा हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा हूँ। और सभी लोग यहाँ पर जो आपने जिन लोगों के बारे में कहा भी, उनका भी बहुत स्वागत है, और उनको बहुत धन्यवाद है कि वो ज्वाइन किए, सुने। और बस यही आपके लिए प्रार्थना मैं करूंगा ब्राह्मण भाव में कि पंडित मदन मोहन मालवीय का लगातार आपको आशीर्वाद मिलता रहे, और जो आप ज्ञान यज्ञ और सरस्वती आराधना में लगे हुए हैं, लगातार हम लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। और काशी में तमाम चर्चाएं होती है कि वहां से विद्वान हटाए गए, वहां से विद्वान, बहुत चर्चाएं हैं, सब काशी में आकर के सबको शरण मिली। और आप तो काशी के ही हैं, और बलिया और काशी और सब एक ही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बार बार बहुत ही हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपके लिए शुभ मनाता हूँ। और मैं हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है आलोक जी, जिन्होंने इसको सब कराया, तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ आलोक जी कि आप धन्यवाद ज्ञापित करिए। आलोक जी, जी आलोक जी, मुझे हाँ बोलिए आप। धन्यवाद। बहुत ये सौभाग्य है मेरा कि इस काबिल आपने समझा मुझे, और मैं ये सारा कार्यक्रम करवा पाया। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हम लोगों को 1.5 घंटे लगातार आप बोलते रहे, और ये सारी जितनी भी जानकारियां हैं हम लोगों के बीच आपने रखा, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये सेवा है। और राकेश जी को एक शब्द में मैंने बता दिया था कि कैथी वाला मेरा संबंध है, ठीक है। तो वो मार्कंडे महादेव का वहाँ मृत को भी जीता जाता है, वो मृत की भी पूजा होती है, वहां के वो है रक्षक। तो ये मेरी कोई टाइम देने का नहीं है, आप कहिए दिन भर बोलूंगा, चाहे मारू चाहे जीऊं। अरे नहीं सर, हमारे दोनों गुरुदेव को सादर कोटि कोटि प्रणाम है, और बहुत बहुत आशीर्वाद मुझे दीजिए आप, और मैं जितना भी प्रणाम कहूँ उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। और सारी जो जनता हमारे साथ, जो स्टूडेंट लोग, जो बाकी जहाँ से भी लोग
हमसे जुड़े, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे 1 घंटा 1.5 घंटा जुड़े रहे सर के साथ, सर को सुने वो लोग, और ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच। और यहाँ हमारे इंडिया ब्रीफिंग के जो सर अभी दिख रहे हैं, इनका सर शुभ नाम जानना चाहूंगा, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे सर। मनोज जी, निशान जी, सोनाली, सभी लोग, बहुत कीमती समय सर का मिला हम लोगों को, और हम लोगों ने सुना इनको, और बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सर को इतना अच्छा सुनने को मिला। क्योंकि कुछ स्टूडेंट लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा था सर कि सर का हम लाइव क्लास करना चाहते हैं, सर को लाइव सुनना चाहते हैं। जो पिछली बार 2019 में एक बार हुआ था लेक्चर संबोधि सभागार में, वहां पे एक बार फिर से सर आए और हम लोग एकदम लाइव सुने सर को। तो इसलिए हम सोचे कि सर अब गुरुदेव जो है प्रोफेसर राकेश पांडे सर, एक सर का समय लेकर के लाइव कराया जाएगा। अब ये तो रहेगा ही लोगों के पास, और किसी सर के पास ज्ञान के खजाने में बहुत से बिंदु है, बहुत सी बातें हैं, इतना ज्ञान का कोश है, इंसाइक्लोपीडिया है। तो किसी और विषय पर आपसे जो है बातचीत कराया जाएगा। और अभी मध्यकालीन जो हमारी आर्किटेक्चर है उस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पंडित साहब बोलेंगे, उनको सुना जाएगा। और सर को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम सर। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी जी। हाँ, ये शिशिर कुमार त्रिपाठी जी हैं। जी नमस्ते गुरु जी। जी केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं सरकार के, और अब ये इलाहाबाद में है। बहुत ही कला के प्रेमी है। बताइए सर, आप प्रश्न पूछिए। गुरुजी, मेरा सवाल आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर सिंह साहब से है। मैंने जितना भी देखा कि विदेशों में स्टोन हेंज से लेकर के जितने इनके मेगालिथिक वर्क है, और वहां से होके आप इधर रोसेलिन चैपल से होते हुए आप आइए सेंट पीटर्स के कैथीड्रल तक, ऐसी सारी इमारतें, और जहां पर देवी माता की यानी ट्रिनिटी में होली मदर की स्थापना है, वो उनके नीचे जियोडेटिक लाइंस या बेसिकली जल, भूगर्भ जल के विशाल भंडार होते हैं। क्या अपने भारत में और विशेषतया काशी में ऐसा कोई सर्वे किया गया है, जियोडेटिक सर्वे? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, प्रकाश में नहीं आया। नहीं है यहाँ पर। ऑलरेडी जब हम लोग स्टूडेंट होके आए थे 67-68 में, उसके बाद कुछ वर्क किया था, तो यहाँ जो पंचगंगा की बात है, सचमुच पंचगंगा थी। पापा जिनका नाम नदी का लेते हैं, एक स्रोत था। और जब हम लोगों ने 70s के काल में कुछ हम लोग जियो हाइड्रोलॉजिकल हमारे डिपार्टमेंट में और जियो फिजिक्स को मिलकर जब सर्वे हुआ था, तो उस समय पाया गया कि 30 ऐसे स्रोत थे जो ऑलरेडी नीचे से जा रहे थे, और विभिन्न जगहों पर पानी रिस के आ रहा था। तो लोग समझे कि तो सीवर का, जब टेस्ट किया गया तो 100% शुद्ध था। और उनको जोड़ा गया था कि माँ को ऐसे चढ़ाओ, शिवलिंग को ऐसे चढ़ाओ। तो काशी की परंपरा ये रही है। काशी में 108 पहले कुंड थे, फिर 56 कुंड तो 1822 में प्रिंसिप के मैप पर प्लॉट है, अब केवल 26 है। 26 में से 4 ही मोर एक्टिव है और आधे कचरे में है। तो ये हम ही लोगों ने नष्ट किया, लेकिन काशी में ये रही है। और अभी जब 1822 के मैप में तो सारा प्लॉट है, 1924 के मैप में ब्रिटिश कैडेस्ट्रल जो मैप बना है उसमें प्लॉट है तो था, लेकिन कालांतर में चीजें ये बदल गई। वो सब ज्यादा कैसे क्या हुआ उसके राकेश जी जी और देवी पीठों की। और एक बात और जो आपने कहा तो अग्नि और जल, हिमालय क्षेत्र में जाएं तो जैसे बापू से लेते हुए या जाके से लेते हुए जाएं तो 6 ऐसे स्थान है जहाँ कंटिन्यूअस जो है अग्नि का फ्लो हो रहा है। तो वो जो है पूरा वो तो जियोलॉजिकल मामला है, लेकिन उसको माँ की शक्ति से जुड़ा गया है। और दूसरे कल्चर में दूसरे ढंग से वो भी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं।